Why has this not started? What is the problem? अच्छा, आ गया. All right, good evening everyone, good evening friends. This is Vaibhav Prakash, your Unacademy Clat educator. And in this session, we have with us Dvisha Hasanandani. As promised, we have brought Dvisha for this session. She secured All India rank of 58 in AILET All India Law Entrance Test, which is conducted by National Law University Delhi in 2021. So yes, for this session we have Dvisha and I will be asking her a lot of questions जो कि हेल्प करेगा जो हमें हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि द्विशा ने किस तरीके से प्रिपेयर किया था इन द लास्ट 3 months बिफोर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन. द्विशा ने हाउ डिड शी मैनेज हर बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड हर AILET एंड क्लैट प्रिपरेशन. ऑल्सो बाय द वे द्विशा को HNLU रायपुर भी मिल रहा था थ्रू क्लैट एग्जामिनेशन, बट ऑफ कोर्स between HNLU Raipur and getting NLU Delhi of course made more sense. So right now she is in campus. We'll also get to know और मुझसे जानेंगे कि कैंपस लाइफ जो है वो कैसी चल रही है, हाउ इज इट गोइंग फॉर हर. Hello, hi, good evening everyone. Could you guys please quickly confirm is there if there is some lag that you guys are experiencing? एक क्विक कंफर्मेशन करो प्लीज जल्दी से. लैग हो रहा है क्या? अच्छा ठीक है. क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा लैग दिख रहा है मेरे फोन पे. जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई जस्ट चेंज माई प्लेस एंड वी विल देन बिगिन. ये थोड़ा सा कुछ तो इशू है. जस्ट गिव मी 1 minute एंड विल बिगिन. ऑलराइट, just 1 minute. क्यों नहीं होता है ऐसा? I hope this should work. I have actually come back to the same place where I sat and took Dave's interview. Is this better or is there a lag even now? Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Welcome to the session. All right, it's better, right? ठीक है, चलो. So we will begin, and with this we will invite Dvisha now. And एक बार फिर से introduction दे दो Dvisha का. So Dvisha Hasanandani secured All India rank of 58 in AILET 2021. She is presently studying at National Law University Delhi. एंड इस सेशन का इंटेंशन जो है वो बहुत ही सिंपल सा है कि किस तरीके से द्विशा ने अपनी तैयारी की थी, क्योंकि ये तुम लोगों के लिए ज़्यादा रिलेटेबल होगा. द्विशा ने भी 1 साल पहले ही अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर किया है. एंड व्हाई डज शी थिंक दैट यू नो ऑल द हार्ड वर्क दैट यू डू राइट नाउ इज वर्दी ऑफ पुटिंग इन ऑल द एफर्ट्स दैट यू पुट इन इज क्वाइट वर्दी, जो कि आपको इट्स स्टिल लैगिंग.
I really don't know why is this happening. एक मिनट एक काम करते हैं, लेट्स सी इफ द्विशा कम्स तो उससे कुछ बेटर होता है क्या. Hi Dvisha, could you please turn on your camera and your microphone? Let's see if this works better. Hi, sir. Good evening, everyone. Hello, good evening Dvisha. Am I audible? Yes, you are. Uh, to all the students who are there in the session, quick confirmation, अभी कुछ better है या it's still lagging? Now it's okay? Great. Which means better. Chalo, great. So Dvisha, welcome to this session and the moment you came lagging का सारा problem जो है वो भी चला गया. अच्छा, also right before the session I and Dvisha were just interacting and Dvisha ने बताया कि NLU दिल्ली में वाईफाई कनेक्टिविटी जो है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है and it might happen कि उसका वाईफाई थोड़ा काम करना बंद कर दे, but उल्टा ही हो गया, मेरा वाईफाई did not work as expected. And but again keeping fingers crossed, hopefully हम दोनों का वाईफाई ठीक से चले and we sail through the session आराम से, right? So welcome Dvisha, how have you been? A quick introduction about yourself to all the learners who are there. Hi, everyone. I'm Dvisha Hasanandani. I was in Mumbai. I studied in Mumbai, born and brought up in Mumbai, and now I'm at NLU Delhi after taking my lit examination. And yeah, campus life is great. Everything's very new, very exciting. So yeah, work hard, and if it's it's supposed to happen, it will, because campus life is amazing, and NLU Delhi really stood up to all our expectations. And yeah, that's द्विशा तुम्हारी आवाज थोड़ी सी धीरे आ रही है, could you एक बार चेक कर सकते हो please? just a minute. Yeah, Just yeah. a minute. हाँ. Am I better? Am I audible now? Is it better? Slightly better. Okay. Maybe you could just keep the microphone a little. Yeah. Is हाँ. this better now? हाँ, yes. Okay. Perfect. Okay. वो थोड़ा माइक्रोफोन दूर हो गया होगा. हाँ, so ठीक है. Yeah. Dvisha, so like what were your subjects in 12th grade? 12th कैसा था तुम्हारा? And like. So I took up science in 11th and 12th. I was in ISC, and I didn't have to take my board examinations because we were a COVID batch apparently. But nevertheless, it was stressful because you had prelims, you had school examinations, and you knew that if the board exams don't happen, you need to do decently well in your prelims to get a good score from the board itself. So initially, it was very stressful in grade 11 when I was doing my studies for school and prepping for the law entrance test at the same time. But eventually, you get a hang of it, and as time passes, you learn how to prioritize, you learn how to multitask at times. So this period of March was the most hectic, I think, because we were not very sure of the dates for the entrance exams, and boards were supposed to happen during May, and we were in preparation mode. But yeah, all is good that ends good. Fair. तो अच्छा, अगेन सो वन थिंग दैट आई पिक्ड अप वाज कि तुम्हारा 12th में तुमने लिया था साइंस सब्जेक्ट एंड अक्रॉस ऑल द स्ट्रीम्स, चाहे वो साइंस कॉमर्स या आर्ट्स हो, देयर इज अ प्रीकंसीव्ड नोशन कि साइंस जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है? तो हाउ डिड यू मैनेज, लाइक तुम्हारा पहले एम क्या था? डिड यू वांट टू डू से नीट लाइक मेडिकल या इंजीनियरिंग, या तुम्हारा स्टार्टिंग से क्लियर था कि मुझे लॉ करना है? एंड हाउ डिड यू मैनेज दिस हेक्टिक कोर्स और हेक्टिक सब्जेक्ट ऑफ साइंस along with your preparation? So the point about the preconceived notions, yeah, that's absolutely right. My parents had it. I had it before taking up science, and the way I chose my subjects was not very smart or reasonable or anything. I just didn't want to do
I just wanted to choose between humanities and science came naturally to me as a student. But I decided that I want to do law right after 10th grade. So me choosing science was not, like a deciding factor that maybe I just do NEET or I'll take the NEET exam or take the JEE exam. I always knew I wanted to do law, but science was this choice because of the preconceived notions. I thought, I'll be able to stay, I'll be able to be dedicated, I'll be more hardworking if I take science. Which is not really the case. It was just something that came to me naturally. आई एम सॉरी बट यहाँ पे ना द्विशा विल हैव टू टेक अ क्विक ब्रेक बिकॉज कुछ तो लैग हो रहा है एंड आई जस्ट नीड टू Not an चेक issue. दिस आई एम एक्सट्रीमली टू एवरी स्टूडेंट आई एम वेरी सॉरी आई जस्ट क्विकली चेक कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है जस्ट बी अ लिटिल पेशेंट विद अस एंड आई जस्ट क्विकली फिक्स दिस इशू आई थिंक इट शुड वर्क नाउ जस्ट अ क्विक चेक अगर ये ठीक हो गया है गाइस कैन यू प्लीज क्विकली कंफर्म कि ये इशू नहीं हो रहा है और लैग अभी नहीं है समथिंग लाइक दैट इज इट बेटर नाउ बाय एनी मीन्स अभी ठीक है ना हेलो हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीवन हेलो चलो ग्रेट ग्रेट अब ठीक हुआ हेलो हाय दिशा आर यू देयर Yeah. Yeah, so sorry. Again, apologies to everyone. Dvisha, first of all, apology to you and to all the students who are attending the session. I'm sorry, but I don't know why does this happen. Whenever we have some very really important session, ये कुछ ना कुछ ऐसा आके प्रॉब्लम हो ही जाती है. But again, nonetheless, start करते हैं. So जैसा कि द्विशा हमें बता रही थी कि उसने 12th में साइंस लिया था एंड मैनेजिंग साइंस along with क्लैट एंड एलेट प्रिपरेशन किस तरीके से किया. सो दिशा अगर एक बार तुम वापस से उस पे डेवलप करना चाहो तो Um, so like said, मैंने 12th में साइंस लिया था बट या मैंने 12th में साइंस लिया था बट देयर वाज नो रीजन कि मुझे साइंस ही लेना है एंड आई डिडंट थिंक कि आई विल डू नीट आई विल डू जेई माय चॉइस ऑफ टेकिंग साइंस was just because I thought if I'm going to take science, I'll be more disciplined, I'll be more hardworking, which is not really the case. It was just something I had in mind. So again, science was difficult. इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है to a certain extent because they are all heavy subjects. Maths is heavy, physics is heavy, chemistry is heavy. So yeah, to a certain extent, that did affect my preparation. But if someone asks me, do you regret taking science? I don't think I would say that I regret taking science. It did its fair share of the job because one benefit of taking science for me was कि मुझे मैथ्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई बिकॉज इवन इन 11th 12th में थोड़ा बहुत मैथ्स हर दिन ही कर रही थी बट फॉर सम ऑफ माई फ्रेंड्स हु टुक अप ह्यूमैनिटीज एंड उन्हें मैथ्स नहीं किया था 11th and 12th it became slightly difficult for them to get back into touch with mathematics. that's actually fair कि भाई मैथमेटिक्स अच्छा हाउ इम्पोर्टेंट द्विशा इज दैट 10 मार्क्स जो 10 नंबर आते हैं एलेट में मैथ्स के वो कितना It's make or इम्पोर्टेंट है break. It's very important. If you're good at maths, so it's in your benefit. And fortunately for people who do not like maths or are not very inclined towards maths, ALET की सबसे अच्छी बात है कि maths के उसके questions are very predictable. You can
you know what kind of questions will come. You'll get a time, energy, work question. You know you'll get a volume area question. Speed का एक question आएगा कि 2 trains जा रही है. So that really helps with students and with a few of my friends who didn't like maths as much, that they knew कि AILET में कैसे सवाल आने वाले हैं. So that's a very good thing about AILET. तो to everyone who is attending this session and will be watching this session, please एक बार इसको note कर लो जो कि द्विशा ने कहा है कि AILET का मैथमेटिक्स 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो 10 नंबर जो है वो मेक एंड ब्रेक करते हैं. उसका बहुत सिंपल सा रीजन मैं आपको बता दूं इज कि AILET में सीट्स बहुत कम है. तो वहाँ पे एक एक मार्क्स के लिए जो है ना वो फाइट होती है, और क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव नंबर भी है तो 0.5 के लिए भी फाइट होगी. तो दैट 10 मार्क्स जो कि आपका मैथमेटिक्स देता है, जो कि मैथमेटिक्स पूछा जाता है, इट बिकम्स वेरी वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. लेकिन देयर इज ऑल्सो अ प्रो साइड टू इट, एंड द प्रो साइड जो द्विशा ने ये हमको बताया, इसकी क्वेश्चंस बहुत प्रेडिक्टेबल होते हैं AILET के. अगर आप AILET के पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी उठा के देखोगे ऑफ मैथमेटिक्स, तो आपको दिखेगा कि यू नो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, वर्क, एरिया, वॉल्यूम एंड इस तरीके के क्वेश्चंस जो है, इस टॉपिक के क्वेश्चंस जो है वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. सो इवन इफ अगर हम इन एरियाज को, इन सेलेक्टेड एरियाज को भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाए मैथमेटिक्स में, सो एक अच्छा स्कोर हम कर सकते हैं. नाउ माय नेक्स्ट फॉलो अप क्वेश्चन द्विशा ऑन दिस इज, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज अ गुड स्कोर इन मैथमेटिक्स इन AILET? आउट ऑफ 10 कितना आना चाहिए? I think anything above 7, 8 is a good score. See, so, you can aim for a 10 in AILET. In AILET, a 10 is very possible because AILET के जो mathematics के sum होते हैं, उसमें working, एक sum का working is not related to the next sum. So suppose मुझे question number 1 नहीं आ रहा है of maths, I don't need to know the answer to question number 1 to go to question number 2, which is not the case in CLAT. CLAT में अभी because it's case-lit based questions given in maths, if I don't know the answer to question 1 of case 1, कभी-कभी question 2 में थोड़ी difficulty होती है. Fair. So I think in AILET a 10 is possible if you work enough and you like maths and you want. And for me, maths is a stress buster during the exams. But 8 is a very good score in maths. तो अच्छा द्विशा, ठीक है, हमने तुम्हारे स्टैंडर्ड से देखा, बट अगेन सो फॉर एग्जांपल मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ कई सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि यार अगर मान लो मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है, तो कैन आई नॉट क्रैक AILET एग्जाम? No, that's not the case because I have friends in NLU Delhi now जिनको मैथ्स नहीं पसंद था, जिन्हें मैथ्स नहीं किया, but still they are in the same college as me. So actually depend करता है कि तुम्हारा या आपका strong suit क्या है. कईयों का GK is really good. I struggled with GK because initially it was very taxing, but for me my mathematics is my strong suit. Correct. So it's not like कि maths नहीं हुआ तो AILET crack नहीं होएगा. That's not the case. But yeah, 5 marks in maths will really help you. It will really, really help you. Like a 5 marks out of 10, 5 questions if you attempt them with like 100% accuracy, or you attempt 6 with a 90% accuracy, I think you can do a very good job at it. Fair. मतलब हाँ, अब देखो, to all the students जो अभी देख रहे हो, which is fair. अगर आपका मैथमेटिक्स एकदम भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अगेन द्विशा ने बताया कि थोड़ा प्रेडिक्टेबल है. आप कुछ टॉपिक्स देख लो, आप 5 टॉपिक्स देख लो जो आपको लगता है कि आप कर सकते हो. से अ नंबर सिस्टम जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, से अ टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, से अ वर्क रिलेटेड क्वेश्चन. तो आप ऐसे 4 से 5 टॉपिक्स देख लो जहाँ से हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड यू मेक दोज एरियाज योर स्ट्रॉन्ग सूट. अगर वो 10 में से आपको 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन मिल गए उन्हीं टॉपिक से, तो आप सॉल्व करके आ जाओ. नहीं भी मिले आपको, 3 या 4 भी मिले, तो ठीक है ना, वो ब्राउनी पॉइंट्स है. यू आर एनी विच यू आर लूजिंग एवरी मार्क. तो वो 3 to 4 क्वेश्चंस जो आपको मिलते हैं एक्स्ट्रा, वो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू NLU दिल्ली जो है वो इंक्रीज कर देते हैं. नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन विषय जो काफी लेजिटिमेट क्वेश्चन है, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में होता है कि यार ये क्लैट और AILET का क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो कितनी डिफरेंट होनी चाहिए, मेरी पढ़ाई कितनी डिफरेंट होनी चाहिए, या फिर इट्स जस्ट कि क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, पढ़ना मुझे सब कुछ सेम है. व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर क्लैट एंड AILET combined? So this is my personal opinion.
मेरे हिसाब से एलेट और क्लैट दोनों की पढ़ाई एक जैसी है बिकॉज सब में टॉपिक सिमिलर है. अभी एलेट में थोड़ा पैटर्न में चेंज आया है बट वो भी पढ़ाई सबकी एक जैसी है. मे बी जीके में आपको क्लैट में थोड़ा ज्यादा इन डेप्थ जाना पड़ता है और एलेट में उतना नहीं जाना पड़ता बिकॉज अगेन एलेट में जीके के क्वेश्चन एक सिंगल क्वेश्चन होते हैं, क्लैट में केस लेट के बेस पे होते हैं. But strategy to attempt the paper has to change drastically for two reasons. Because one, in CLAT you get 2 hours, in ALET you get 1.5 hours. तो अगर आप दोनों में सेम स्ट्रैटेजी यूज करोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट थोड़ा मैसअप होने के चांसेस हैं. एंड दूसरा, सवाल पूछने का तरीका बहुत अलग है. एलेट क्लैट में सवाल आया कि वेटलैंड्स डे कब है एंड क्लैट में सवाल आया कि वेटलैंड्स डे कब है एंड एलेट में सवाल आया कि हाई कमीशन के ऊपर एक सवाल आया. तो उन दोनों में बहुत वेरिएशन है. तो हाई कमीशन का क्वेश्चन था वो जनरल नॉलेज नहीं, वो जनरल नॉलेज था, बट जो रामसर वाला था वो करंट अफेयर्स था. क्वेश्चनिंग इज वेरी डिफरेंट. जैसे एलेट की इंग्लिश इज कम्प्लीटली डिफरेंट कंपेयर टू क्लैट इंग्लिश. क्लैट इंग्लिश इज ओनली कॉम्प्रिहेंशन एंड एलेट इंग्लिश इज not very comprehension heavy. It has one or two comprehensions at max. Okay. But again, strategies need to change. You can't use the same strategy. Fair. Dvisha, I think हम लोग का ना फिर से काफी लैग हो रहा है and I have clearly no idea as to why is this happening. Is it an issue from my end? No, it's not an issue from your end because clearly I am also lagging on the screen. So मुझे and मेरी नेटवर्क स्पीड भी ठीक है, मैंने टेस्ट किया है. Guys, just give us one more minute so that मैं काम करते हैं. What we'll do is we'll not use Zoom and maybe we'll try with Google Meet. शायद हो सकता है उससे कुछ better हो जाए हमारे lag के issue को. So just give us a minute. I'm stopping the stream for now for just a minute and then we'll resume our interview. So yes, I think we are back online. Hi Dvisha, are you there? Yes, sir. I hope. Am I audible? Yes, you are audible. I just hope ये lag वाला issue जो है वो नहीं हो रहा. Friends, जितने लोग हो, can you please एक बार confirm us quickly कि there is no lag issue, it's better now. A quick confirmation maybe that it's not lagging, or is it still lagging? What happened? No. चलो ठीक है, अभी फिलहाल कोई लैग नहीं हो रहा है. So let's continue. And there have been so much of distractions which I really did not want, but again something not in our control. हाँ, अच्छा. Any which way, Dvisha, जो कि मैं वापस से तुमसे पूछना चाहूँगा, is कि जैसा कि तुमने बोला कि पैटर्न क्योंकि डिफरेंट है, चेंज होता है, तो हमारा अप्रोच जो है वो चेंज होना ज़रूरी है. What would you suggest कि आप अप्रोच कैसे चेंज करोगे एलेट के लिए और क्लैट के लिए? Like when you are sitting in the exam hall, how do you change the approach? तो एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात, ये साल का जो एलेट का पेपर था. Sorry. No, it's okay. It's fine. It's okay. You are in a hostel. Yeah, I'm in campus, so yes, exactly. my You will roommate's have. coming in. It's fine. You will have friends coming over, and that's fine. That's part and parcel of living in a hostel. So Yes. hello to your friend as well. Yeah. Okay. Yeah. So one very important thing was that ALET 2021 was a very unexpected paper. जैसा हमने prepare किया था ALET 2021 वैसा बिल्कुल नहीं था. Correct. We thought कि बहुत difficult होएगा, but
ऑन अ रिलेटिव स्केल वो ज्यादा इजी था. तो Okay. अगर मैं वो डिफिकल्ट वाला अप्रोच ले जाती और रिजिड होती कि नहीं मेरे को तो जो मैंने मॉक्स में किया है वही करना है, आई डोंट थिंक आई वुड हैव बीन एबल टू क्रैक एलिट. तो एग्जाम रूम में जाने के बाद पेपर को एक बार देखने के बाद भी आपका अप्रोच थोड़ा बहुत बदलना चाहिए. यू कांट बी रिजिड इन योर अप्रोच एज टू दैट आई हैव डिसाइडेड आई विल डू दिस इन माय मॉक्स, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोना एमिलेट ओवर हियर. एंड दूसरी बात, हर जन के लिए अप्रोच डिफर करता है. मेरे लिए क्लैट का अप्रोच था एक रीडिंग हैवी सेक्शन करने के बाद मैं नॉट अ वेरी रीडिंग हैवी सेक्शन कर लेती. जैसे मैं लीगल करने के बाद करंट अफेयर्स कर लेती, बिकॉज करंट अफेयर्स में पैसेज रीड करना इज इम्पोर्टेंट. बट अगर आपको उसके सवाल के जवाब नहीं आते हैं तो पैसेज से वापस बार बार रीड करने से वो जवाब नहीं मिलेंगे ज्यादातर. हाँ. फिर मैं अब इंग्लिश कर लेती थी, जिसके बाद मैं मैथ्स करके लॉजिक कर लेती थी. अगेन मैथ्स इज नॉट वेरी रीडिंग हैवी बिकॉज उसमें सॉल्विंग होता है. सो दैट वाज माय अप्रोच फॉर क्लैट. For AILET, I had a different approach. I knew that each question is going to be 1 mark. Each question is not related to the previous question. So I used to start with GK and LGK because in those things, if I know them, I know them. And if I don't, I can't come and think, try to remember. Once I was done with that, I would finish the objective questions in English, in logical, analytic reasoning. I would not do the very reading heavy sections in AILET because AILET comprehensions उनको बोल दे आर नोन टू बी टफ. एलिट कॉम्प्रिहेंशन का एक दिमाग में होता है कि ये टफ होने वाला है. एंड फिर एंड में अगर मेरे पास टाइम बच जाता तो मैं वो कॉम्प्रिहेंशन कर लेती थी. So basically what you're saying is कि you need to have 2-3 plans. Yes, precisely that. हाँ, तो मतलब like before you go to the examination आपके पास एक plan A, plan B, plan C होना चाहिए. Yes. कि यार अगर this does not work then I have a different approach. अगर even if that does not work then I have a third approach. And a plan D if none of your approaches work and you have to make a new approach at that very moment. हाँ fair, but उस समय बहुत stress हो जाएगा जब बहुत stress. So how do you manage your emotions at that time in the exam hall? So during the examination, what happened with me was I bubbled the wrong answer. Oh. And when you bubble the wrong answer, the first thing is कि oh मेरा 1 mark तो गया, उसके साथ negative mark भी गया मेरा, right? So my thing was that just because of this 1.5 marks I'm losing now, I can't let my whole paper go away. So I just took a minute, like not a minute, I didn't have a minute. I took 10 seconds, took a sip of water, and मैंने बोला अब जो हो गया है उसको छोड़ो and let's go ahead of it. I tried solving an extra question to compensate for that 1.5 marks, which I was not intending to solve. Okay. Yeah. So at that moment, you really need to just take those 10 seconds, breathe, take a sip of water, and get back. You don't have a minute to waste. These exams thrive on the fact that पे negative marking है and you have a time restriction that's very strict. So that was basically my strategy. Take 10 seconds, but get back to it. So this is one very important tip to all the learners जो अभी इसको देख रहे हैं is कि you really need to manage your emotions. अगर आप अपने emotions पे काम नहीं करते हो, अगर आप अपने emotions को control नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं जाके वो आपको hit करेगा. And if you remain calm, just like and अगर हम calm की बात करते हैं, तो हमारे लिए the biggest icon of being calm is Mahendra Singh Dhoni. You just picturize it. मैं ये हमेशा I think मैं तुमको भी बोला होगा द्विशा जब तो just remember that fellow, that just remember his face, just stay focused, just stay calm and be like कि ठीक है. And see how did she think. Like द्विशा ने बोला कि ठीक है 1.75 1.5 मेरा जा रहा है, अब मैं उसको बैठ के रब करूंगी, जो हो गया वो हो गया, I can't change it. But over compensate करने के लिए मैं कुछ question सोच रही थी मैं छोड़ दूंगी, but I will take my chances with it. And see, fortune favors the brave. इसी को कहा जाता है. यहीं से आता है कि fortune favors the brave. She took a risk. It was a calculated risk. She managed her emotions, and fortune favored her. आज वो NLU दिल्ली में बैठी है. वो 1.5, 1.75 उसकी destiny को determine नहीं किया. So manage your emotions. Stay calm. Stay focused. Stay calm. Take a 10 seconds break. द्विशा एक क्वेश्चन जो बार बार ये पूछा जा रहा है इज कि लाइक हाउ डिड यू मैनेज योर स्कूल एंड योर एलेट. सो मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंटली फ्रेम करना चाहूंगा. हाउ मच टाइम डिड यू एक्चुअली गिव टू योर
AILET preparation or law entrance preparation every day? So I'm gonna. I think people who are watching this maybe in grade 11 or in grade 12 or I don't know. Fair So enough, in yes. grade 11, I would dedicate around 1 hour, 1.5 hour maximum to law every day. That was inclusive of reading up on my current affairs. Because to be honest, I wasn't very serious at that time. In grade 11, I was more concerned on learning the topics and everything rather than self studying after if I had any class for my examinations. I would not focus on self study. I was just focused on, let me just get a hang of the concepts first. Okay, what is reading comprehension? How do you solve mathematics and all? But in 12, after Diwali vacations, that's when I knew, okay, you know what? Abhi pad lo, nahi to you won't get into an NLU. And after that, after the Diwali vacations is when I started getting very serious about the number of mocks I take, how I analyze my mocks. So post the Diwali vacations, I would give around 2 hours to law every day. And if I was taking a mock that day, which would be around 2 or 1.5 hours, उस दिन फिर 4.5 घंटे तक हो जाता था. But this is only if I'm taking a mock, and the day I'm taking a mock, I will ensure I'm not doing something very heavy. Like I would go through the current affairs of the week, which I can do while listening to some music. Because you can't overburn yourself, like you can't overwork yourself. मैं अगर 2 घंटे का मॉक दे रही हूँ उसको मैं 1 घंटा एनालाइज कर रही हूँ उसके बाद मैं 2.5 घंटे और पढ़ रही हूँ इफ यू कैन डू इट ग्रेट वेरी गुड फॉर यू बट आई wasn't able to do that. So after my mock, my analysis, I would take around 1.5 hours for just going through my general knowledge, current affairs, and in March it was all hands on. Like you are done. You by March usually you're done with your exams, your prelims, so you prepared for your boards around 55-60%. That's when I was like, okay, now it's time to do law. I would read concepts, I would read the newspaper, I would go through my current affairs today, I would take mocks, analyze. So I think by March, April was like when I got really serious. And if I'm not wrong, ALET this year is in June or 26th to 25th Correct. June. Correct. So we had it a month later, but if I had an exam in June, I knew in April till the time of the exam, it was time to take your mocks very seriously. Because if you're not taking mocks, you don't know where you stand. All right, Dvisha, I think I will cut short this interview because there is some really big technical glitch. I'm sure बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, and I will definitely get back to you if you have some time a little while later. Sure, sir. I would Sure. definitely want to interview you once again, but. Yeah, apologies for this entire glitch thing that has happened, but let's see and if we can reschedule this and do it again. Sure, sure. है ना? But it was Yeah. lovely having you today. Same And here. Same here. I'm Thank you so sure much. बच्चों को जितना भी समझ में आया होगा वो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा. But Yes, sir. इसको एक बार और थोड़ा सा properly करते हैं and let's I'm sure कि वो बच्चों को और ज़्यादा beneficial रहेगा. So, Absolutely. है ना? So Yeah, thank thank you you so so very much, much. sir. Thank you so very Thank much, you. Dvisha, for being here, and Thank you. see you again very soon. Yes, sir. Thank you. Good night, everyone. Chalo, bye bye. Bye. Thank you guys, and again, like I said, apologies for the technical glitch that has been happening, for the entire lag that has happened. I'll try and get Dvisha once again very soon so that we can continue the session a little properly. Um, on that note, I would also